Hello students. In today's video we are going to start a new chapter that is related to forms of energy and energy transfer. So what is energy? The ability to do work is called what? It's called energy. Energy is used in the movements of humans and animals. यानी हम इंसान या animals हमने अगर कोई movement करनी है, if we are walking around, if we are doing some kind of work, it requires energy. ठीक है? It also produces light in the light bulb, heat in the heater, and sound of the school bell. तो अगर हम एग्जांपल्स लें कि एनर्जी और कहाँ कहाँ यूज होती है, तो एनर्जी जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स के अलावा, ठीक है, it is used in bulb to light it up, it is used in heater so that it gives us heat, ठीक है. So there are actually many forms of energy that are used by different living things या different machines in order for them to do work, ठीक है. So if I ask you this question, where do we get energy from? Let's ask this question. From where do we get energy to do some work? So the answer is we have food that we eat in order to get energy, right? इसके अलावा और भी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वी हैव एन एग्जांपल ओवर हियर. फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ? यानी ग्रो करने के लिए प्लांट्स जो है वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं? दे टेक एनर्जी फ्रॉम द सन, राइट? इसी तरह if we look around we see that there are vehicles on the road and we get a question in our mind, from where do the vehicles get energy? So we know that petrol is a fuel that we use to give energy to the vehicle, right? And if I talk about ceiling fan or if I talk about AC, right, तो ये कौन सी एनर्जी पर रन करता है? यानी what kind of energy is used by these electronics? तो उसके लिए we have electricity. Alright, तो ये electricity क्या है? It's actually a form of energy. So you can see everything around us requires energy, and it is actually different forms of or different sources of energy जो use किए जाते हैं. For example, there are some sources of energy that are natural, जैसे कि sunlight जो है हो गई, wind, food, इसके अलावा oil, coal, wood, ये सारी चीज़ें जो हैं they are natural resources. Alright, or they are not man-made, they are natural resources. Let's move on to the next slide. All right, so in this slide we are going to discuss what is a transformation of energy. If I give you a very simple example, okay, on a sailing boat the wind energy is used to make the boat move. अगर आपने कभी बोट में राइड की है, जो इलेक्ट्रिक बोट नहीं दूसरी वाली बोट होती है, सेलिंग बोट जिसको कहते हैं, तो यू कैन सी कि उसके अंदर एक कपड़ा लगा होता है, राइट, दैट इज हेल्पिंग द बोट टू मूव. एंड हाउ डज इट हेल्प इट? It helps the wind to push that cloth, and it keeps on sailing on the water, right? So wind energy is transferred into motion. तो जो हम सेलिंग बोट की बात करते हैं, बोट की, उसमें कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? उसमें ये यूज हो रही है विंड एनर्जी, ठीक है. और विंड एनर्जी जो है वो क्या हेल्प कर रही है उसको? यानी इफ द बोट इज यूजिंग द विंड एनर्जी, तो वो उसके बदले में बोट को क्या एज इन उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है? तो इट्स एक्चुअली मूविंग द बोट, तो उसको हम कहेंगे कि ये मोशन एनर्जी में चेंज हो रहा है, यानी इट्स मूविंग. ऑलराइट, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसमें हम अगर बात करें डैम्स की जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी,
ठीक है। सो लेट्स डिस्कस के डैम्स जो हैं वो होते क्या हैं और किस तरह वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। In our daily life, we see that one form of energy can be transferred into another. For example, अभी मैंने आपको बोट की एग्जांपल दी, इसी तरह electricity is produced from fast flowing water. It is हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो फास्ट मूविंग वाटर होता है ना, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है, किससे? फास्ट मूविंग वाटर, उसको हम क्या कहते हैं? उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइड्रो electricity. Hydro means water, and electricity is the energy that is produced by fast moving water. For this purpose, a dam is built. इस पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या बिल्ड होता है? डैम बिल्ड होता है, ठीक है। The water of the stored in a lake at a certain height. जो लेक होती है, ठीक है, यूजुअली ये लेक के पास होता है डैम, एंड लेक इज एक्चुअली उसको एक लेवल पर, एक हाइट पर उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम देयर द वाटर फ्लोज थ्रू द टनल्स, और फिर उसके बाद आप टनल्स, उनके नीचे दे मेक द टनल्स, और वो क्या करते हैं, इसी तरह उन टनल्स से वाटर आगे को फ्लो करता जाता है। The energy in the flowing water runs in the turbine which generate the इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे जाके उन्होंने मशीनरी यूज की होती है, जनरेटर जिनको हम कहते हैं, ठीक है। और वो जनरेटर में जब ये फ्लोइंग वाटर जाता है तो इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन अ थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, अगर हम थर्मल पावर स्टेशन की एग्जांपल लें, अगर हम डैम्स की एग्जांपल तो हमने ले ली है ना, राइट। इट गोज थ्रू द जनरेटर, वो मूविंग फ्लोइंग वाटर से जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और वो कहाँ पर मूव कर जाता है वो ट्रांसफॉर्मर्स में मूव कर जाती है, और इसी तरह पूरे सिटी में या डिफरेंट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। सो दिस वाज an example of how one energy is actually transferred into another. In this case, water का जो flow था उससे ना जो है energy produce की गई है, और वो energy produce किस में हुई है? water flow जो है वो हुई है energy, हम यहाँ लिखते हैं जी, water से energy जो हुई है produce वो हुई है electricity. Alright. So this is the example of transformation of energy. There are many other examples that we can take जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टॉर्च लेते हैं एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरीज, ठीक है, तो बैटरीज आप उसके अंदर पुट करते हैं, सेल जिसको हम कहते हैं, और जब वो बैटरीज को हम ऑन करते हैं तो जो बैटरीज है उसकी एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर होती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। इसी तरह अगर हम फूड की एग्जांपल लें, तो जो फूड हम करते हैं, खाते हैं, वो ट्रांसफ़र करता है हमारी एनर्जी को हमारी बॉडी में, जो हमें हेल्प करता है इन मूविंग अराउंड, राइट। So this is the example of transformation of energy. I hope you guys understand it. See you guys in the next video with more information about energy.